Kalpana, I just joined the Vetiver plantation in Lalbagh Lake today. I'm so happy. It has, I never knew it has so many properties, so many good properties for environment, that it prevents soil erosion, it grows so deep, and it has a lot of medicinal properties also. So for environment it is needed. So actually I got my hands soiled. So that's the beauty of it. It has made my day, on a beautiful day in beautiful weather. Vetiver or Lavancha incata, which grows in Malnad, plentiful, that which has preserved all its vibrancy and greenery. So let's all make everywhere Malnad. Thank you. Thank you, Dr. Kalpana, for volunteering with us in Soil and Soul. Awesome experience. And we are doing it in many lakes. Yeah. So we are looking at follow you. working on the lake ecology rather than just for the pleasure. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. Yeah, my name is Sagar, and first I would like to say thanks for the opportunity to be a part of this Lalbagh Soil and Soul. Thanks Rupa ma'am for inviting me. I love to. So this is so refreshment after a long time we've been together and doing all this. So I would like to say all people should do this and save green, save environment. Without environment we cannot live. So save Mother Earth. Thank you, Sagar, and we would like more youngsters to join us. They are so much of energy they have. We need lot of energy to revive this earth. 100%. I'll always be a part of this and I love to come every day. Thank you. Thanks. Thank you. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? Not viable for planting. अच्छा सुनीता जी, आप जो यहाँ पे प्लांटेशन के लिए आई हैं लालबाग में, हम लोग वेटिवर लगा रहे हैं लोटस पॉन्ड में। आपको इसमें क्या अच्छा लगा? आप क्या चीज़ से प्रभावित होकर आई हैं? एक्चुअली इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो है बहुत ही दिल के बहुत करीब है, तो इसीलिए और प्रीति जी से बहुत उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जिस प्रिंसिपल्स के साथ वो चल रही हैं, काम कर रही हैं सॉइल एंड सोल के साथ, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इसीलिए मैं जुड़ी। और लालबाग भी दिल के बहुत करीब है। ये बैंगलोर का आइकॉन है। हाँ, और मेरा बॉटनी बैकग्राउंड रहा है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है, तो वो भी शायद कारण होगा ये लालबाग से जुड़ने का। तो ये सारे कारण हैं, और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद कोविड में बाहर निकले, हाँ, और एक कारण के लिए निकले, कॉज के लिए, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू।